वैभवी अस्ति। वयं दशमीकक्षायां छात्राः परिपाठ सादरीकरणं कुरुत्। अद्य सुभाषितम् आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिका पकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनं। मौन हे सर्वश्रेष्ठ धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम वेदिका अस्ति। अद्य पञ्चाङ्गकथायाम् अद्य वासरः गुरुवासरः अस्ति। अद्य दिनाङ्क 5 अगस्त 2025 अस्ति। अद्य सूर्योदयः सपाद 6 अभवत्। अद्य सूर्यास्तः सपाद 7 भविष्यति। धन्यवाद। नमो नमः। अहं श्रेयशी पाटील। अद्य दिनविशेषः एक राष्ट्र एक संविधान इति वचनस्य 5 वर्ष पूर्ण अभवत्। सरलार्थ एक राष्ट्र एक संविधान या वचनाला 5 वर्ष पूर्ण झाली। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम अनुष्का अस्ति। अद्य अहं संस्कृतवार्ताः वदति। प्रथम भारत फिलिप्स् देशय मध्य द्विपक्षीय वार्ता। सरलार्थ भारत फिलिप्स देशामध्ये द्विपक्षावरती चर्चा झाली। द्वितीय प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य भवनचे उद्घाटन करिष्यति। सरलार्थ प्रधानमंत्री मोदी यांनी कर्तव्य भवनाचे उद्घाटन केले। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम प्रतीक्षा अस्ति। नमो नमः। मम नाम ज्योत्स्ना अस्ति। अद्य वयं प्रश्नं पृच्छामः। संस्कृतस्य प्राचीन व्याकरणकार कः? संस्कृतचे प्राचीन व्याकरणकार कोण? संस्कृतस्य प्राचीन व्याकरणकारः पाणिनी सन्ति। संस्कृत भाषेचे प्राचीन व्याकरणकार पाणिनी हे आहेत। क्लॅप्स द्या तिच्यासाठी। भगवद्गीतेस्य कति अध्यायाः सन्ति? भगवद्गीतेचे किती अध्याय आहेत? उत्तरं सम्यक् नास्ति। नाही बरोबर। उत्तर चुकीचे आहे। उत्तर सम्यक् अस्ति। भगवद्गीतेचे 18 अध्यायाः सन्ति। भगवद्गीतेत 18 अध्याय आहेत। इंद्रचापस्य कति वर्णाः सन्ति? इंद्रधनुष्याचे किती रंग आहेत? इंग्लिश सांगते पुढे सांगा मोठ्याने सगळ्यांनी। उत्तर सम्यक् अस्ति। इंद्रचापस्य 7 वर्णाः सन्ति। इंद्रधनुष्याचे 7 रंग आहेत। चतुर्वेदस्य नामधेय कः? 4 वेदांची नावं सांगा। हा सांग। हे बोल नका रे। उत्तर सम्यक् अस्ति। टाळ्या वाजवा त्याच्यासाठी। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्याह। संस्कृत भाषायाः आद्य कवी कः? संस्कृत भाषेचे आद्य कवी संस्कृत। उत्तर सम्यक् अस्ति। संस्कृत भाषेचा आद्य कवी कालिदास अस्ति। संस्कृत भाषेतील आद्य कवी कालिदास हे आहेत। धन्यवाद।